Rajasthan, in fact, is heading for a major cabinet rejig. Just an hour from now at 4 p.m, Rajasthan will get its new cabinet. Congress leader Sachin addressed the media and said that the cabinet rejig has sent a good message as members from different communities have been inducted into the cabinet. Pilot also added that there are no fractions in the Congress and all sections will work together. He also pitched that the Congress will come to power again in the state of Rajasthan in 2023. In a meeting at Chief Minister Ashok Gehlot's residence on Saturday, all ministers resigned ahead of the mega reshuffle. The expansion is being seen as a reconciliation between Chief Minister Ashok Gehlot and Sachin Pilot. Pilot loyalists Hemaram Chaudhary, Brijendra Ola, Dipender Singh Shekhawat, Ramesh Meena, Murari Lal Meena have been given cabinet berths. The cabinet expansion is being seen as a small victory for Sachin Pilot, who has led an unsuccessful revolt against Chief Minister Ashok Gehlot since 2020. So in a short while from now, there will be a rejig in the Rajasthan cabinet. Some Sachin Pilot loyalists have been in fact accommodated in this new cabinet of Ashok Gehlot. Remember, yesterday evening after a meeting at Ashok Gehlot's residence, all his previous ministers, the entire cabinet, in fact the Council of Ministers, tendered in their resignations and basically waited for a signal from the High Command as to who will be inducted into the new cabinet. Sachin Pilot, addressing the media, has expressed his happiness over the new cabinet and the look of the new cabinet, saying that different communities have been represented in the new cabinet. Of course, there are some voices of discontent. Now let's listen in to this exclusive conversation with Sachin Pilot. We have all fought the elections collectively in 2018 and won the elections collectively. So today the reshuffling or the expansion of the cabinet is just an ongoing exercise. So I think it's wrong to say ex-loyalists, Y-loyalists. We're all working in the same objective to defeat the BJP. Mrs. Gandhi is the Congress president, and under her leadership we are trying to achieve what we couldn't achieve previously, which is to repeat the government every 5 years, which is now in 2023, the elections are due. So I think the intent was to increase the participation of the Dalits, the tribals, women, young people, and have a much larger geographical representation so that every worker of the party feels a part of the system, because we've all worked hard to form this government. So yesterday's rejig, I think, is a step in the right direction. Geographical balance, social balances, they all have been taken into account, and women, minorities, SCs, STs, OBCs, MBCs, all those categories of people have been given prominent positions, which I think is a very welcome step. Well, there are no factions. Like I said, when we fought the election and won the election, we won it together. We have all tried to make sure that the Congress party retains this predominant position in Rajasthan, and the by-elections are an example where we defeated the BJP hands down. So I think there are this talk of group, faction, numbers, loyalties, etc. We're all working under the leadership of the Congress party and Mrs. Gandhi and Rahulji, and I think that's the way it should be. My colleague Dev Ankur Vadhavan is now joining me live from Jaipur on this. Dev, you just spoke to Sachin Pilot a short while ago. He seems to be content with the cabinet rejig and the look of the new cabinet, but there are voices of discontentment which are coming to the fore, like Safia Khan. Oh, absolutely, Paulomi. There will be no easy way out of this for Ashok Gehlot, because it was not just the Pilot camp which he had to satisfy. There were also the MLAs from the BSP, the independents, and also his own party MLAs. Now, Safia Zubair Khan makes an important point. She says that in Uttar Pradesh, Priyanka Gandhi says that there will be 40% representation for women, whereas in Rajasthan itself, where there is a Congress government, the women representation is as low as 10%. She also says that there are several capable faces. Pop you over there because Ashok Gehlot is speaking. Let's listen in to the Chief Minister of Rajasthan. ये हमारी बहुत बड़ी ताकत थी इस बात की। मुझे उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलकर कहते लागू करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और योगदान करें। सुशासन देंगे, जगह वापस आए। ये जो माहौल बना है इस बार, ये सब आपका ज्ञान बना है। जिस प्रकार के पिछले 3 साल बना है, 3 साल में जो मेहनत की सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने करी है, विधायकों ने करी है, मंत्रियों ने करी है, सबके निर्णयों से चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोई और चुनौती आई हो,
कोई कमी नहीं रही, प्रदेशवासियों के साथ लेकर हम चल रहे हैं। इसीलिए आप बाई इलेक्शन में भी 8 में 6 बाई इलेक्शन आप जीतते हो, 8 में 6। अभी तो उनका टुकड़े साफ हो गया, जमानत जब्त होगी, 3 नंबर पर है। कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि अभी लोगों का मूड क्या है। उसी रूप में जो हमारे मंत्री बने हैं या पहले थे, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जब मंत्री बन जाता है तो पब्लिक भी उम्मीद करती है भाई अपनी भूमिका तो निभाएंगे। किस प्रकार हम जनता का विश्वास जीतते रहे क्षेत्र में, या जो मंत्री बनता है वो प्रदेश का मंत्री होता है, तो प्रदेशवासी आएंगे जो मिलने के लिए, उनका टाइम फिक्स हो कि इस टाइम वो मिलेंगे घर पे, बिना अपॉइंटमेंट मिलेंगे, वो टाइम फिक्स हो, ऑफिस का टाइम फिक्स हो, ऑफिस मिलेंगे काम करेंगे, अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग चलती रहे। ये तमाम काम अगर ढंग से करेंगे और पब्लिक में जाएगा तो कोई सरकार आने रोक नहीं सकता। कोई मंत्री नहीं बन पाएंगे लोग, क्योंकि सबको उम्मीद होती है। जब से ये लिस्ट आई है तब से मेरे पास भी टेलीफोन आए कि मिलने आए मुझसे लोग, अरे मागंडी से आए, अध्यक्ष से मिले हैं। हम जानते हैं उनकी भावना क्या है, वो भी कोई कम नहीं है। जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे लोग जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है। जिस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किए उन्होंने। हम लोग जब क्राइसिस में थे तब भी काम किया, कमी नहीं रखी। 34 दिन तक हमारे साथ रहे वो लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे बीएसपी के आए हुए लोग थे या हमारे कांग्रेस लोग थे। उनको कैसे जिंदगी में भूल सकते हम, इस बात का एहसास मुझे आज दिमाग में रखें। पर सोनिया गांधी जी का एक नारा था, एक बार एआईसीसी में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखे, और बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था जो धैर्य रखता है कभी न कभी उनको चांस मिलता ही मिलता है। ये एक्चुअली बात है और ये बात मैं मानता हूँ, धैर्य रखना ही पड़ता है। सबके फैसले एक साथ हो नहीं सकते। ये जो मंत्रिमंडल बना होगा, ये अजय माकन जी जानते हैं, प्रियंका जी जानती है, या विन कुमार जी जानते हैं, या फिर सोनिया जी राहुल जी जानते होंगे कि किस रूप में राजनीति चिंता करते हुए भविष्य की और कितनी एक्सरसाइज की होगी, किस रूप में की होगी। महिलाएं भी आए, एससी भी आए, एसटी का भी भागीदारी हो, माइनॉरिटी की भागीदारी भी हो, किसानों की भागीदारी भी हो, सब तरह से निचोड़ कर करके जो फैसला हुआ है वो हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। सब मिलकर हम लोग चलेंगे। बाकी जो बच गए हैं उनको हम कहीं एडजस्ट भी करवाएंगे। सब मिलके ऐसा माहौल बनाएंगे कि पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि इस बार कांग्रेस जो है संकल्प किए हुए हैं कि बार बार जो बदलाव आता है सरकारों में, इस बार वहाँ पर रिपीट करके दिखाएंगे कांग्रेस जी हमारी भावना होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि गोविंद दोतासरा जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस जन जो है राजस्थान के, वो सब एकजुट रहेंगे। इनके इशारे पर चाहे वो आह्वान करें मीटिंग का, कन्वेंशन का, अधिवेशन का, शिविर का, तो सबको भागीदार बनना है, चाहे एमएलए हो या मंत्री हो। ये ऐसी मीटिंग जो अभी तो आज तो तिलक लग रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वरना कांग्रेस अधिवेशनों में मंत्री या मुख्यमंत्री हो वो पूरे अधिवेशन में जाओ और जगह में बैठ जाती है। ऐसा नहीं वो आगे बैठेगा मंत्री, कोई प्रोटोकॉल में सब बराबर है हमारे कांग्रेस के अंदर, जाजब के ऊपर सब बराबर है। इस रूप में भावना रहती है कांग्रेस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावना आप समझ रहे हैं, उसी रूप में आप चलेंगे। यही बात करता हुआ मैं पुनः बधाई देता हूँ तमाम हमारे साथियों जिनको एक मौका मिला वहाँ पर काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को निराश नहीं करेंगे। ये मैं इन सबसे अपेक्षा करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। Right, so you heard the Chief Minister of Rajasthan over there trying to tell those who possibly are discontent with the new rejig of the Gehlot government that there is space for everyone. Everyone has a role either within government or within the party and the organization, and that hopefully they will not in any sense express their unhappiness and will not let down Sonia and Rahul Gandhi. Devankur Vadhavan continues to be with me live from Jaipur.
Ashok Gehlot, they're trying to extend an olive branch to those who are discontent, but will that work? Well, Paulomi, some crucial words and some crucial comments made by Ashok Gehlot. He asks his party workers, leaders, MLAs to keep dhairya or patience, clearly indicating that the news of the kind of discontent that is simmering within the Congress ranks has reached Ashok Gehlot, and he's now in a way trying to placate, trying to pacify things within the Congress ranks, because he knows that the struggle ahead for Congress in Rajasthan is going to be twofold. On one hand, it has to keep its flock together, and on the other, it has to see as to how it can try and ensure that the jinx that the Congress has been facing in Rajasthan for the last 20 to 25 years, that there has been no consecutive Congress governments in the state for more than 2 decades now, that jinx is somehow broken. And that is what Ashok Gehlot spoke about, that we have to ensure that there is no reason for Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, the Congress party high command, to feel let down by the way the state party leadership acted. And that is why he time and again says and tells his party MLAs that keep dhairya, stay patient, and you will get the reward. That is what Ashok Gehlot has been communicating, because he knew very well that the day cabinet expansion is announced in Rajasthan, there will be certain sections which will feel unhappy and unsatisfied about how things have worked out so far in the state. Well, it remains to be seen if the troubles for the Congress party in their state unit in Rajasthan are over now with this new cabinet look of the Gehlot government in Rajasthan. Dev, thank you so much for joining us. We're slipping into a very short break. Stay tuned to India Today. News and updates will continue on the other side.